Vishal Malkan. He will answer all your stock queries, and Gajendra Kothari of Etika Wealth Management is our personal finance guest. So gentlemen, afternoon to both of you. First, let me start off with the caller who joins in. Sunena calls in from Bangalore. Hi Sunena. Hi Sonia. Hi, good afternoon. What's your question? Yeah, my question is regarding Asian Paints. I would like to buy Asian Paints. Okay. But is it a good time to buy the stock? Is there any reason you have selected that stock? It is a consumer discretionary stock, right? So in the economic recovery, I thought it will benefit. And recent crude oil prices also got reduced. Sure. All right. Sunena, are you traditionally an investor who picks your own stocks? How long have you been at it? You don't go through mutual funds at all? No, I'm basically a mutual fund investor, but have a small portfolio of stocks as well. Okay. Vishal, what would your advice be to Sunena? I mean, this looks like an opportune moment to buy Asian Paints because it's fallen so much. But given that, you know, the earnings are throwing up some concerns, would you be worried or would you buy this dip? I would definitely go for a buy in this stock. It's been outperforming since long and continuously making higher tops and higher bottoms on weekly as well as monthly charts. So definitely would recommend to buy, but I would just recommend that not to buy the whole thing in one shot. Maybe she can put a buy 50% right now, and maybe another 5 to 7% correction can come, which where around 800 she can buy the rest of the quantity so that it gets a good average price. All right, Sunena, so that's the advice for you. Go ahead, buy. It's a good one to, it's a good stock to invest in. But if you want to buy them in smaller lots. Don't buy it in one go. That's the reply for you. We have another caller now. Chitra is calling us from Mumbai. She has investments in JSW Energy. We understand. Chitra, go ahead. What's your question? Hi, Lata. Good afternoon. I have JSW Energy 1,000 shares at 80 rupees, which I bought around 9 months back. I can hold for another 9 to 10 months, but is it a good time to offload part of it and invest it in some other stock? I also hold Reliance Power, by the way, so I have exposure to 2 power stocks. All right. Back to you. What's your advice, Gajendra? Oh, sorry. What's your advice, Vishal? I would definitely say a good pick, and it's been outperforming since the last 3 or 4 months, and power sector has been in the limelight in the last couple of weeks with good momentum, with volumes also. So definitely a hold actually rather than offloading. I always recommend stocks which are doing well should not be taken profits prematurely, and put a trailing stop loss. That would be a good idea. And if she wants to advise, she wants to invest more, I can recommend a couple of more stocks, which would be SKS Micro and Ashok Leyland. Okay, that's okay. Chitra, anything further that you want to ask? No, I also hold Ashok Leyland. I hold it at 13 rupees, 2,000 shares. So, I already have one of that. SKS I'll look into. Thanks a lot. Oh, that's a big gain that you're sitting on, Chitra. So congratulations on your Ashok Leyland holding, 66 rupees now. So it's a multi-bagger for her. But let's move on. We have a caller joining us. She has a personal finance query. Shalini Mathur calls in. Hi, Shalini. Hi, good afternoon. Hi, good everybody afternoon. There. Okay, I have invested part of my retirement amount in bank FD. Okay. And I would like to invest around, say, 2 lakhs in mutual funds. I would like to know whether I should invest lump sum or in a staggered manner. I'm also invested in ICICI True Focus Blue Chip and Franklin India Pharma Plus. A small amount is invested in that. So I would like you to recommend me also if I can invest in any other fund. All right, Gajendra, what was your recommendation be? Shalini ji, I think you have done a wonderful thing by putting this money into the 2 funds which you mentioned. Since you mentioned that you have money in fixed deposits and now you want to diversify, so 2 lakhs, what you have, lump sum amount, you can put this in a staggered manner. So
today at this stage the markets look at a very lifetime high, so it may not be a good idea to put lump sum straight away into at these levels. We may expect some correction, like a few thousand points. So that is the time when you have some money to deploy at those levels. So if you do a STP, which is a systematic transfer plan, wherein you put your money into a debt fund or a liquid fund and then give instruction every month, say around 40,000 money should go from debt fund to an equity fund. So over a 5 to 6 month period, your money keeps moving from a debt fund to an equity fund. Now how does this help you? So in case if there's a market correction by 2,000 or 3,000 points, let's say next month, you have the option to switch the entire amount or part of the amount from debt fund to equity fund when the market falls. So that would be a very good idea. You can do the STP in the existing funds which you have, ICCA Focused Blue Chip Fund, which you mentioned, and the Prime Up Fund. But my only suggestion would be that when you're investing these kind of funds, your horizon should be at least 5 years. You may have short-term volatility, so that you need to kind of ignore. And I think in the long term, you can expect good double-digit returns which are tax-free. All right. Well, Gajendra, would you want to make any disclosures? Do you work for any of these funds? Yeah, so we are advisors to all these mutual funds, and we have invested our own money also into these funds and also our clients' money as well. Pankaj calls in from Haryana. Hi, Pankaj. Yeah, ma'am. Hi, बोलिए आपका सवाल क्या है? मैम मेरी एज है 25. अच्छा. मेरी 2 साल की एक बेटी है, 3 साल की एक बेटी है. तो मैं 3,000 रुपए की SIP शुरू करना चाहता था. मुझे नॉलेज नहीं है, तो थोड़ा आप गाइड करोगे. 10 साल का मेरा टाइम पीरियड रहेगा. मे बी 15 भी हो सकता है, 20 ईयर्स भी हो सकता है. मिनिमम 10 ईयर्स में इन्वेस्ट करूंगा 3,000. और जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती रहेगी तो मैं इसे इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाना चाहूंगा. तो इसी के अकॉर्डिंग मुझे पूछना था कि मैं कौन सी कंपनी की SIP शुरू कर सकता हूँ. पंकज जी, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको तजुर्बा नहीं है? आप तो काफी सीजन्ड हैं, आपको पता है कितने साल तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे करना है. तो कंग्रेचुलेशंस. बट एनी केस, आई थिंक गजेंद्र, योर रिप्लाई. सो लता, एज यू राइटली सेड, नहीं हिंदी में बताइए प्लीज. बहुत अच्छा आपकी जो ये सोच है आपकी जो ये सोच है बहुत अच्छी सोच है, और आपने 25 इयर्स में आपने ये जो प्लान किया है स्टार्ट करने का, ये आपको काफी इसकी बेनिफिट मिलेगी लॉन्ग टर्म में. और आपका हॉराइजन बहुत क्लियर है 10 साल 15 साल के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है. चूंकि आप फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप बैलेंस फंड से शुरुआत कीजिए. इसमें क्या होता है, 65% आपका इक्विटी में होता है और 35% डेट में होता है. तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड आप अराउंड 12 to 14% रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं. इसमें काफी अच्छे फंड्स हैं इस कैटेगरी में, जैसे कि HDFC बैलेंस फंड है, बिरला सन लाइफ 95 बैलेंस फंड है, और फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का P डायनामिक रेशियो फंड ऑफ फंड है. ये सारे बैलेंस फंड्स हैं जो कि 65% के आसपास इक्विटी में इनका इन्वेस्टमेंट रहता है. तो इसमें आप 1,500 रुपए की SIP शुरू कर सकते हैं. बाकी जो 1,500 रुपए की SIP है वो आप एक डाइवर्सिफाइड लार्ज कैप इक्विटी फंड में कर सकते हैं. 10 साल के पीरियड में ये भी आपको करीबन 12 से 15% के बीच में आपको रिटर्न्स इसमें मिलेंगे SIP में. और इसमें जो फंड्स हैं, ICICI फोकस ब्लू चिप इक्विटी फंड है, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड है, और बिरला सन लाइफ फ्रंट एंड इक्विटी फंड है. तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि आपको थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है पोर्टफोलियो में, बट चूंकि आप SIP के जरिए कर रहे हैं, तो जैसे मार्केट नीचे आता है तो आपका जो ये अमाउंट इन्वेस्ट होता है उसमें आपको अच्छे यूनिट्स मिलते हैं. तो इसमें खाली बने रहिए, और साल एवरी 1 ईयर आप उसको खाली रिव्यू कर सकते हैं. तो लॉन्ग टर्म में इसको आपको काफी फायदा होगा. ओके. पंकज जी, आपको कोई और सवाल है? हाँ मैम, मैं यही पूछना चाह रहा था कि जैसे अब मेरे को इतनी नॉलेज तो है नहीं है, जैसे अब साल के लिए मैं SIP शुरू करता हूँ, तो इस दौरान अगर मान लो मार्केट अच्छे ऊपर हाई पे चली जाती है, तो क्या मुझे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए या उसे इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखना चाहिए? ओके. गजेंद्र जी, आप क्या सजेस्ट करेंगे? पंकज जी, चूंकि आपका होराइजन 10 साल क्लियरली है, तब मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए. आप इसमें बने रहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट्स और ऊपर जाते रहेंगे. हमें पता नहीं है कि हम कब प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, उसके बाद मार्केट जाएगा कि नहीं. तो मार्केट टाइमिंग करना सही नहीं है एक रिटेल निवेशक के लिए, क्योंकि हमारा मेन काम ये नहीं है. और SIP एक बहुत अच्छा तरीका है. अगर मार्केट ऊपर भी जा रहा है तो आपकी वो फिक्स्ड अमाउंट ही इन्वेस्ट हो रही है, चाहे वो ऊपर जा रहा है चाहे नीचे जा रहा है. तो अगर आप 10 साल के लिए बने रहते हैं तो आप इससे अच्छा कॉर्पस बना सकते हैं. अगर आप एग्जिट करेंगे तो फिर शायद हो सकता है आप वापस उसमें एंटर नहीं कर पाए जब मार्केट नीचे आए, तो वो हमें नुकसान हो सकता है. ओके. पंकज जी, आप शायद समझ गए कि मार्केट को टाइम नहीं करना चाहिए. हमें छोटे इन्वेस्टर्स को इसका कोई पता नहीं रहता, इसलिए इट्स बेस्ट टू स्टे इन्वेस्टेड.
Okay, we have another caller now. This is Tarun Soni, who's calling us from New Delhi. Go ahead, Tarunji. What is your question? Ma'am, actually, I hold Sun Pharma at the rate of 902, 100 quantity. Okay. And do you normally stay put or are you a trader? No, I'm a long-term investor. All right. Fine. Anything else you wanted to ask? That's it, ma'am. All right. Well, Vishal, here is a buy and hold investor. Is Sun Pharma the right stock? Definitely it has been performing since long, and no signs of cracks in the chart on weekly as well as monthly chart, so it can still perform, and can of course you need to put a stop loss to each and every trade. So I would suggest a stop loss around 845 to 850 would, which if it breaks then it can go further lower, and hold on with that stop loss and can expect good returns in the next 1 or 2 years, as he's willing to hold on for a long term period. मैडम नमस्कार। नमस्कार जी, कहिए। एक्चुअली मेरे पास टेक महिंद्रा के शेयर्स हैं जी, 100 शेयर्स हैं। हाँ जी। और मैंने 6 महीने होल्ड किए हुए हैं। ओके। और आप नॉर्मली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या ट्रेडिंग करते हैं? नॉर्मली मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ जी, पर इस टाइम थोड़ी ट्रेडिंग इसलिए करना चाहता हूँ जी, क्योंकि जो अभी कंपनी के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं उसमें उन्होंने एक तो जो है स्प्लिट किया है 1 to 1 जी, और 1 to 2 सॉरी, और दूसरा बोनस शेयर्स देने की बात कही है। हाँ। तो मैं इस बीच में मेरी स्ट्रेटजी ये है कि मैं अभी जो है अगर वो तो स्टॉक जो है 2900 के रेट पे चल रहा है, हाँ जी, तो मैं 3000 से ऊपर जाता है तो बेच कर और फिर रिकॉर्ड डार्ट से फिर खरीदना चाहता हूँ। तो अच्छा। मुझे इसके लिए थोड़ी आपकी एडवाइस चाहिए। ठीक है। विशाल, व्हाट्स योर एडवाइस एंड इफ यू कुड आंसर द जेंटलमैन इन हिंदी। आई वुड से कि उनको स्टॉक में बने रहना चाहिए, और ये जो रिकॉर्ड डेट के पहले और बाद में बेचने से उसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो मुझे लगता है बने रहना चाहिए। आपका इन्वेस्टमेंट अच्छे स्टॉक में और अच्छे प्राइस पे हुआ है। एक्चुअली ये स्टॉक काफ़ी टाइम से हम लोग रेकमेंड कर रहे हैं, तो ये दिस इज़ लाइक ये जैसे 90s का इन्फोसिस है, वैसे अभी ये 2015 का ये इन्फोसिस है टेक महिंद्रा, सो इट इज़ गोइंग टू आउट परफॉर्म मोस्ट ऑफ द IT स्टॉक, सो इट शुड कीप होल्डिंग ऑन टू दिस स्टॉक विदाउट डूइंग एनीथिंग. All right. Well, that's the word coming in on Tech Mahindra. We have another caller who joins in, Manish Das. Okay, he actually writes in to us from Haryana. He wants to know if gold ETFs can be in cash to physical gold. Basically, he wants to redeem the units in future. He's 36 years old and is a professional. Gajendra, what would your recommendation be? Yeah, Manish ji, normally in most mutual funds, gold ETFs, you cannot redeem in physical gold. There are only few fund houses which allows you to do. For instance, there is a fund house Motilal Oswal Most Gold Shares, wherein if you invest in this kind of a gold ETF, you can redeem back in the form of physical gold as low as 10 grams. There are, however, few fund houses which also allow you to redeem gold, but that's in very high denomination of around 1 kg or above kind of thing. So if you are looking to withdraw, in the form of physical gold, then you have no option but to go with, let's say, Motilal Oswal or the ones which give you above 1 kg.